Hello everyone. So here I am with 20 questions from the chapter Some Unique Places. Let's see how much you can score. So start karte hain. End of this challenge you have to tell me that how much you have scored in the comment section. Okay. So the first question. Which is the southernmost point of India? इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इट इज कन्याकुमारी, इट इज इंदिरा पॉइंट, इट इज पोर्ट ब्लेयर or it is Chennai. So the correct answer is Indira Point. So Indira Point is the southernmost tip of India. और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? It is in Andaman and Nicobar. ठीक है? Next, what is an island? Island क्या होता है? It is a land surrounded by mountains. ये एक ऐसा land होता है जो mountains से surrounded होता है. और बी ऑप्शन, अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, ऐसा लैंड जो पानी से घिरा हो चारों तरफ से. और सी, लैंड कवर्ड ओनली बाय फॉरेस्ट, ऐसा लैंड जो फॉरेस्ट से कवर हो. और डी, लैंड नियर अ रिवर, ऐसा लैंड जो रिवर के पास है. सो व्हाट इज एन आइलैंड? सो द करेक्ट आंसर इज an island is a land surrounded by water on all sides. ऐसा लैंड जो पानी से घिरा हो चारों तरफ से, राइट? जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे आइलैंड हैं, लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है. नेक्स्ट, which bird are mentioned as being found only in the अंडमान आइलैंड? सो ऐसे कौन से बर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ अंडमान आइलैंड पे पाए जाते हैं? A, peacock and crow. B, Andaman wood pigeon and Andaman hornbill. C, sparrow and pigeon. D, eagle and parrot. So ऐसे कौन से दो बर्ड हैं जो सिर्फ अंडमान आइलैंड पे पाए जाते हैं? So it is Andaman wood pigeon and Andaman hornbill. So these two birds are not found anywhere else. ठीक है? These are unique to Andaman Island. Next, why should everyone wear a लाइफ जैकेट ऑन अ फेरी? कभी भी आप फेरी पे जा रहे हो, बोट पे जा रहे हो, वी ऑलवेज वियर अ लाइफ जैकेट. लाइफ जैकेट हम पहनते हैं. सो क्यों पहनते हैं? टू स्टे वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए. टू लुक स्मार्ट, स्मार्ट दिखने के लिए. सी, टू हेल्प अस फ्लोट इफ वी फॉल इन वाटर. सो अगर हम पानी में गलती से गिर जाते तो वो हमें ऊपर की तरफ फ्लोट करने में हेल्प करता है. और डी, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज टू हेल्प अस फ्लोट इफ वी फॉल इनटू वाटर. अगर हम पानी में गिर जाते, कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना, फेरी उलट जाती है या फिर कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है एंड यू फेल इन वाटर, सो अगर आप लाइफ जैकेट पहने होगे देन यू विल बी फ्लोटिंग ऑन द वाटर. आप पानी के ऊपर तैर सकते हो एंड बाय द टाइम सम रेस्क्यू टीम विल कम. ठीक है. इवन इफ यू डोंट नो स्विमिंग, दिस लाइफ जैकेट विल प्रोटेक्ट यू. ठीक है. नेक्स्ट, what gives shelter to many sea creature? So sea creature को shelter कौन देता है under the ocean? So it is sand dunes, B, coral reefs, C, mountains, or D, grassland. So the correct answer is coral reefs. So coral reefs क्या करते हैं? They provide shelter to many sea creatures. ठीक है? Next, the Sundarban is famous for which type of a forest? So सुंदरबन में किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? A, coniferous forest, B, mangrove forest, C, thorn forest, or a D, bamboo forest. So the correct answer is mangrove forest, right? The Sundarban is the largest mangrove forest in the world. ठीक है? Next, why do some mangrove roots come out of the water? आप मैंग्रोव ट्री को देखे हो ना, तो मैंग्रोव ट्री में क्या होता है? सम रूट्स दे कम आउट ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर आ जाते हैं वो. ठीक है. सो व्हाई दे कम आउट ऑफ द वाटर? ए, टू कैच फिश, फिश को पकड़ने के लिए. बी, टू हेल्प द ट्रीज ब्रीथ, ना ट्रीज को ब्रीथ करने के लिए. सी, टू कलेक्ट फ्रूट्स. और डी, टू क्लाइंब ट्रीज. सो उनके रूट्स बाहर क्यों आते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज बी, टू हेल्प द ट्रीज ब्रीथ, क्योंकि वो पानी में रहते हैं ना, सो हाउ दे विल ब्रीथ. सो दीज
roots they come out of the water, पानी के ऊपर आ जाते हैं. They are known as a breathing roots, and these roots help the trees to breathe, take the oxygen. ठीक है. Next, how do mangrove roots help protect the land? So ये मैंग्रोव के जो रूट्स होते हैं कैसे लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं? ए, दे इंक्रीज वेव्स, वेव्स को इंक्रीज कर देते हैं. बी, दे होल्ड द सॉइल टुगेदर, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. सी, they remove all water. Or a D, they make the soil dry. So how the mangrove roots help to protect the land? So the correct answer is B, they hold the soil together. ठीक है, soil को hold करके रखते हैं so that the soil does not ये soil erosion को prevent करते हैं. ठीक है, they hold the soil together and it helps to stop the waves. ओके, सो बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स जो आते हैं ना, इट विल जस्ट कैरी अवे ऑल द सॉइल विथ इट, बट these roots hold the soil together so that it can prevent the land from washing away. ठीक है. Next, in what way do people near the Sundarban depend on mangrove forest? So अब हमने चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना, so there are a lot of people who live near this Sundarban Delta. ना सुंदरबन डेल्टा के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं and they totally depend on the mangrove forest. So for what they depend on the mangrove forest? किस लिए वो mangrove forest पे depend करते हैं? A, for their daily needs. B, only for tourism. C, only for sports. Or a D, they do not depend on them. So the correct answer is for their daily needs. So a lot of people who are living near these mangrove forests in the Sundarban Delta, they depend on these forests for their daily needs. Na? Yeah, they get a lot of a product from the forest. Forest से उन्हें काफी कुछ मिलता है, right? And they earn money by selling these products also. So they depend completely on these mangrove forest. ना mangrove forest पे completely depend करते हैं. Next, the seven sisters, along with which state, make up what the chapter calls Northeast India. हमने देखा था ना, there are seven sisters. ना, there are seven states जिन्हें हम seven sisters कहते हैं. And along with which one more state, it is known as a Northeast India. एक state को अगर और mix कर देंगे, then it will be called as a Northeast India. ठीक है? So which state? Goa, Sikkim, C, Kerala, or a D, Gujarat. So the correct answer is Sikkim. So along with the seven sisters, अगर हम सिक्किम को भी मिला देंगे, then it will be called as a Northeast India. ठीक है? Next, what is Hargila? Hargila क्या है? A, Greater Adjutant Stork. B, Indian Peacock. C, Andaman Hornbill. Or a D, Kingfisher. Hargila क्या है? It is a bird and it is actually a Greater Adjutant Stork. ठीक है, इन्हें हरगिला भी बोलते हैं और Greater Adjutant Stork भी बोल सकते हैं. ठीक है. Next, what are living root bridges? ये living root bridges क्या होते हैं? These are A, metal bridges. B, bridges made from strong tree roots. C, plastic bridges. Or a D, painted wooden bridges. ये क्या होते हैं? So these are the bridges made from the strong tree roots. ये पेड़ों के जो roots होते हैं ना, उनसे बनाए जाते हैं. And these are called the living root bridges. And you can find these bridges in Meghalaya. ठीक है? So tree roots across the stream become strong enough to walk on when cared for. So बहुत छोटे छोटे streams को cross करने के लिए the people in Meghalaya they make the bridges with the tree roots. ट्री के roots का use करके वो bridges बना देते हैं. They are very strong. Over a period of a time they become stronger and stronger. Even some bridges are more than 100 years old. ठीक है? Next, Bhut Jolokia is famous for being. So Bhut Jolokia क्या है ये? One of the sweetest chilies. B, one of the hottest chilies in the world.
C, a type of a fruit, or a D, a leafy vegetable. So Bhut Jolokia, Bhut Jolokia is one of the hottest chilies in the world. सबसे तीखी मिर्ची है ये, ठीक है? It is one of the hottest chilies in the world. Next, what is the Western Ghats known for? Western Ghats किस लिए famous है? A very little wildlife. B, rich plant and animal life. C, no forest, or a D, only flat land. So, the Western Ghats is known for rich plant and animal life. So Western Ghats में बहुत सारे पेड़ देखोगे, different variety of plants and different types of animals are found in the Western Ghats. ठीक है? Next, which animal is highlighted as being found in the Western Ghats? So you have to find out of this which animal is found in the Western Ghats. Western Ghats में कौन से animals found मिलते हैं? A, lion-tailed macaque. B, polar bear. C, penguin. Or a D, camel. So the correct answer is lion-tailed macaque. Okay. So these lion-tailed macaque are found in this Western Ghats. Next, why do many forest dwelling communities depend on forest for? So बहुत सारे लोग forest के ऊपर depend करते हैं. Lot of people still live in the forest and they depend on this forest. So for what reason they depend on the forest? A, for a food, medicine and livelihood. B, only entertainment. C, only roads. Or a D, nothing. So the correct answer is they depend on the forest for their food, medicine and livelihood. Okay. Next, what was the Save Silent Valley movement about? So ये Save Silent Valley movement क्या था? A, building a new city. B, joining together to save the forest. C, cutting down a forest. Or a D, building the planned dam. So the Save Silent movement was all about they have joined together to save the forest. ना forest को बचाने के लिए everyone has joined, the villagers, students, scientists, they all have come together and have stopped a dam that could have flooded the Silent Valley. So सबने एक साथ आया और एक डैम जो वहाँ पे अगर बिल्ड हो जाता तो वो Silent Valley flooded हो जाता. So they all have come together to stop this dam. ना ये डैम को बनने से उन्होंने रोका so that still we have this forest. ठीक है? Silent Valley. Next, what are protected areas? Protected areas क्या होते हैं? A, places where trees can be freely cut. हम आराम से trees को cut कर सकते हैं. B, special places kept safe to protect animals, plants and nature. ऐसा जगह जहाँ पे हम animals को protect कर सकते हैं, plants को protect कर सकते हैं, nature is also protected. C, places used uh, only for buildings. Or D, places without animals. So protected areas are the special places kept safe to protect animals, plants and nature. ऐसा जगह जहाँ पे हम animals, plants को protect कर सकते हैं. No one is allowed to cut the trees, no one can do hunting. ठीक है? Next, which action helps protect wildlife? So out of this, which action can help to protect the wildlife? Protecting birds' nest. B, cutting every tree. C, hunting animals. Or a D, polluting rivers. So which action can protect wildlife? So it is the protecting birds' nest. हमने देखा था ना? So how the people have increased the number of the Hargila. So they have protected the nest of this Hargila. ठीक है? So by protecting the nest, they have increased the number of this Hargila. ठीक है? Bird. Next, what is the main lesson of this chapter? इस chapter का main lesson क्या है? A, every region of India is the same. B, nature is separate from people's lives. C, India's regions are unique, connected with nature and need our care and protection. Or a D, only forests are important. So the correct answer is
C, that is India's regions are unique. ना इंडिया का हर रीजन यूनिक है, but they are connected with the nature and need our care and protection. Okay, so this was the main theme of this chapter. So with this we have completed our 20 questions and you have to tell me that आपके कितने score आए. ठीक है? Tell me your score in the comment section. So well done everyone. So see you in the next class. Till then, bye, take care and keep learning.